नमस्कार, क्लास 10th मैथ्स चैप्टर पॉलिनोमियल 5th वीडियो में आपका स्वागत है। और यहाँ पर हम बात करेंगे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस की जो गोल्डन जो रिलेशंस हैं इन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल, उन दोनों रिलेशंस की हेल्प से हम बहुत सारे एक्सप्रेशंस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस कॉमन है चैप्टर 2 और चैप्टर 4 में। चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी ऐसे क्वेश्चंस हैं और चैप्टर 2 पॉलिनोमियल में भी हैं। ओके, तो बोर्ड में कहीं भी आ सकते हैं ये। तो आइए इन सभी को डिस्कस करते हैं। Here we are given that polynomial px is ax square plus bx plus c, यानी इस फॉर्म का कोई भी पॉलिनोमियल हो सकता है। We have taken a general value, okay, and zeros are given alpha and beta. Now with the help of relations we have to find the values of these expression and many more expressions. Fine, we will see how can we find the values. Clear? So we know there are two relations. First relation is that alpha plus beta is equal to, here we know, minus b upon a. Clear? This is equation number 1. It is known to us, right? Second relation we also know that alpha into beta, this is equal to c upon a. Equation number 2. These two values are known to us. For every equation we know it. Okay? Now how to find this alpha minus beta, its value? ये बड़ा challenging thing है. Okay, let us see. क्या हम अल्फा एक रिलेशन यूज कर सकते हैं, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। बहुत जगह आपको मैथ्स में ही काम आएगा, ध्यान रखिएगा। दिस इज व्हाट अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। व्हाट इज दिस होल स्क्वायर? कैन वी राइट दिस वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर? देखते हैं। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज व्हाट? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, and this value is what? It is alpha square beta square minus 2 alpha beta. तो अगर हमें इस टर्म को इसके इक्वल रखना है तो उसमें कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिएगा ये दो टर्म तो सेम है बट ये टर्म डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ नेगेटिव है और यहाँ ये टर्म पॉजिटिव हो रहा है। तो हमें क्या करना होगा? we need to subtract something, and what is that? 4 alpha beta। अगर यहाँ से माइनस कर दें minus 4 alpha beta तो क्या होगा? ये दोनों कंबाइन होकर क्या हो जाएगा? It will become minus 2 alpha beta, and hence our formula will be deduced. ठीक है, तो यहां से देखिएगा what is alpha beta? Alpha plus beta, this is minus b upon a. Fine. What is alpha into beta? This is c upon a. ठीक, जो क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में मिलेगा वहां पर न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगी और ये सारा एबीसी जो है ये सब आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज की फॉर्म में मिलेगा और इजीली आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आप यहाँ होल स्क्वायर रिमूव करेंगे सो व्हाट विल हैपन? इट विल बिकम स्क्वायर रूट। फाइन फाइन, अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर रूट। यू कैन अप्लाई प्लस माइनस साइन। सो these are the two values for this expression. Let us see this thing. This is here, right? 1 upon alpha minus 1 upon beta. If we take LCM here, alpha into beta, now divide with alpha we get beta, and divide with beta we get alpha, and this is minus. Now you see beta minus alpha can be found by using this sort of relation. Minus में अगर minus से multiply करेंगे so it will become minus and plus. Okay, alpha into beta is what? C upon a. Okay, this is how we can get the values of 1 upon alpha minus 1 upon beta. What is the value of this expression? Let us see. We take LCM, a alpha plus b into a beta plus b. Okay, divide with this value we get this value here, so a beta plus b, and similarly when we divide with this value we get this value, so a alpha plus b. I think ये नॉर्मल प्रोसीजर है, सिंपल एलसीएम लिया हमने एंड और सिंप्लीफिकेशन किया इसका। नाउ a बीटा एंड a अल्फा, दीस आर लाइक टर्म्स, यहां पर हम कॉमन लेते हैं। सो लेट अस राइट हियर, दिस इज a कॉमन लेने के बाद वी आर गेटिंग अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। नाउ b and b, this becomes 2b plus 2b होल अपॉन वी हैव प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वैल्यूज। ठीक है, देखिए प्रोडक्ट क्या होगा? a अल्फा ओपन करते हैं ब्रैकेट, सो दिस इज a स्क्वायर अल्फा बीटा, this into this means a b and alpha. Now we multiply with b, so we get a b and beta, then b into b becomes b square
ओके, क्या हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहां से पुट कर सकते हैं? ऑफ कोर्स वी कैन पुट, सो दिस बिकम्स माइनस बी अपॉन ए, ठीक, एंड 2b, this becomes a square alpha beta, yes alpha beta we have c upon a, ठीक है, and plus we can see from these two we can take alpha ab common, so we are left with alpha plus beta, ठीक है, and alpha plus beta is what? minus b upon a, okay, plus b square. अब देखिए हमने क्या पुट किया, जो भी अल्फा और बीटा वाले टर्म्स थे उन सभी की वैल्यू यहां पर पुट कर दी in terms of a b and c, and remember a b and c are what? They are constants, fine, they are constant values, they can remain in the solution, but alpha and beta are variable terms, they should not remain, fine. So on simplification you will get the answer for such an expression. ओके, हमें केवल इनकी वैल्यू फाइंड करनी थी, हमने अप्रोप्रिएट फॉर्मूला लगाया, टेक्निक यूज किया, ऑन सिंप्लीफिकेशन वी कैन इजीली गेट द आंसर, एंड दिस इज हाउ वी सॉल्व दीस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस. ओके, तो अब मैं एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेता हूं, फाइन, और न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ में हम देखते हैं कि बहुत सारे और एक्सप्रेशंस की वैल्यू फाइंड करेंगे. ओके, लेट अस टेक दिस polynomial px, fine, here zeros are alpha and beta. Okay, there is no need to find the zeros, fine, without finding zeros we can find the values of the given expressions. Okay, so we need to find the values of first 1 upon alpha plus 1 upon beta. Okay, second we find alpha square plus beta square, and then we'll find alpha cube plus beta cube. Okay, let us see how we find the values of these expressions. Here numerical values are given, alpha and beta are zeros, so we can quickly come to the conclusion that alpha plus beta is actually what? Sum of zeros. This is how much? First relation, minus b upon a. What is b here? Minus 1. So this is minus of minus 1 upon a is 3. So this is 1 upon 3, equation 1. What is product of zeros? This is c upon a. What is c? Minus 4 upon a means 3. So this is minus 4 upon 3, equation number 2. Alpha plus beta and alpha beta are known to us with the help of two relationships between the zeros and the coefficients. Now we have to find the values of these expressions using these relations. Okay? In such questions there is no need to find the values of alpha beta by solving or by factorizing. Okay, although you can do, okay, that is also one method, but this is the technique which CBSE asks its students to apply it. Okay, this is the technique should be used to solve these questions. This becomes, we are taking LCM, so this becomes alpha into beta, okay, LCM, and beta plus alpha. Okay, so alpha plus beta is how much? You can see 1 upon 3, okay, and alpha into beta is minus 4 upon 3. Okay, 3 3 cancel, so this is nothing but minus 1 upon 4. This is the answer. Fine, for first part. Now this part you can see alpha plus beta whole square. This can be written as alpha plus beta whole square minus 2 alpha beta. Okay, यानी a plus b whole square में से 2ab minus करते हैं, then we get similar term. Fine, and we know alpha plus beta. What is alpha plus beta? 1 upon 3 whole square minus 2 into alpha beta. What is alpha beta? Minus 4 upon 3. Now simplify, we get this is 1 upon 9 minus minus plus 4 2s are 8 upon 3. Okay, LCM 9, so this becomes 24 plus 1 25. Okay, so 25 upon 9 is the answer here. Okay, so alpha plus beta square without even finding the values of zeros. देख रहे हैं आप? Okay, we are having the golden equations, golden relations. इनको यूज करना है. This is what the CBSE requires. Okay, ये आपको करना है. चलिए, alpha cube plus beta cube क्या होगा ये? A plus b and then a square b square and then minus ab. ठीक है? A square plus b square minus ab into this. This is the formula. Now see, this thing we have already found. अगर आपने फाइंड कर लिया है तो उसको डायरेक्टली वैल्यू यूज कर सकते हैं. अदरवाइज आप सेपरेटली पूरा फाइंड कीजिए and then you can use this value. Okay, this is already known to us.
1/3. Okay, alpha square plus beta square we have found 25/9, so we can use it. Alpha into beta, this is here, minus 4/3. Okay, so easily we can simplify this value. Fine, this becomes how much? 1/3 into 25/9 plus 4/3. So here we multiply and divide by 3, so 9 LCM becomes 9. So 1/3 into this expression 25 and this is 12. 12 and 25, this is 37. Fine. So 37/27 is the value for this expression. Now we try to find the values of these expressions with the help of these relations. Okay. So let us see this first. Alpha square plus beta square. This can be written as alpha square and whole square. Fine. Similarly, this can be written as beta square whole square. Okay. So it will become alpha square whole square and beta square whole square. So a square plus b square. Okay, we assume that alpha square is just a and beta square is just b. Okay, so we have the formula of a square plus b square. How much is this? A plus b whole square minus 2ab. क्या हमने assume किया यहाँ पर? a को assume किया है alpha square, b को assume किया है beta square. Okay, this will be written as a को क्या assume किया हमने? Alpha square. So this will become alpha square plus beta square whole square minus 2a into b. It means alpha square into beta square. अब देखिएगा, when we open this formula, this will come alpha 4 plus beta to the power 4, okay, plus 2 alpha square beta square, which will cancel with this expression. Okay, अभी आपने कुछ सेकंड पहले ही हमने ये सॉल्व किया है. Clear? So you can put this value directly, and this can be written as 2 alpha beta whole square. This portion is rough. Okay, this is rough portion. Now this can be written as alpha into beta whole square. Fine, and this value you can easily put. ठीक है, तो आपको क्लियर हो चुका है. आप कैसे फाइंड करेंगे? Now come to this part. Here you take LCM. LCM will be alpha into beta. Now after taking LCM, beta will cancel, so this will become alpha into this. So 2 alpha square. Here similarly, when you divide by alpha, you get 2 beta square. ठीक है, 2 can be taken common, so we get alpha square plus beta square upon alpha beta. Again the same expression, and you can again write this is alpha plus beta whole square minus 2 alpha beta whole upon alpha into beta. आप easily values put कर सकते हैं. This will be 2 alpha plus beta is how much? 1/3 whole square. Okay, minus 2 into alpha beta. What is alpha beta? Minus 4/3. ठीक है, upon alpha beta again minus 4/3. So on simplification of this expression, you can get the value of this kind of term. Fine. Now last, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अगेन देखिए सिमिलर एक्सप्रेशन बन रहा है यहाँ पर. एलसीएम लीजिए, अल्फा बीटा, दिस विल बिकम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. ठीक है, यहाँ पर फिर से एलसीएम लीजिए, दिस इज अल्फा बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा. अब ध्यान से देखिएगा कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वैल्यू हमने फाइंड कर ली है. ठीक, वी कैन यूज इट. अल्फा इनटू बीटा गिवन टू अस, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा बोथ आर गिवन. ओके, बोथ वी नो इट. ठीक है, इक्वेशन 1 एंड 2 से हम डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते हैं. अल्फा बीटा डायरेक्टली वी कैन पुट द वैल्यू. ओके, सो पूरा एक्सप्रेशन की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं बड़ी इजीली. ओके, विद द हेल्प ऑफ दीज गोल्डन रिलेशंस. फाइन. सो दीज सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस कम इन योर एग्जामिनेशन. अक्सर आ जाते हैं. ठीक है, या तो चैप्टर 2 में आ जाते हैं या चैप्टर 4 में आ जाते हैं. ओके, आपको पता होना चाहिए कि इनको कैसे डील करना है, कैसे सॉल्व करना है. ठीक है, सो क्यूबिक पॉलिनोमियल ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, जहां पर जीरोस होंगी अल्फा बीटा एंड गामा. ओके, ये सारे ग्रीक अल्फाबेट्स हैं और यहां पर इन तीन जीरो से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, वो सभी हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में. तो जरूर से देखिएगा नेक्स्ट वीडियो. अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कीजिए और अपने ढेर सारे कमेंट दीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, मैं भी आगे वीडियोस बनाऊं. थैंक्स फॉर वॉचिंग.